back to our YouTube channel. My name is Jaweria Siddiqui and My name is फैसल हरल जवेरिया। क्या न्यू अपडेट है हमारे पास आज? एयर इंडिया न्यू एयरबस A350 आ चुकी है और अब जो है अंग्रेज इसमें ट्रेवल कर रहे हैं और व्लॉगिंग ये कर रहे बहुत हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक वो लोग जिन्होंने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी होती हैं अपनी अपनी कंट्रीज़ में, और अगर वो एशिया में आएंगे, एशिया में वो देखेंगे कि इंडिया में ये चीज़ है या चाइना में ये चीज़ है, तो उनका रिएक्ट कैसा हो सकता है, वो सवाल कैसे कर सकते हैं, या उनको नॉर्मली लगता है, या उन्होंने क्या सोचा होता है कि यार हम जो है वो बहुत आगे निकल गए हैं, हम जहाँ जा रहे हैं पता नहीं वहाँ कैसी लाइफ होगी, और वो ऐसी यहाँ पे चीज़ें देखते हैं तो वो क्या करते हैं, ये सारा हमें पता चलेगा देखने के बाद। चलें वीडियो को शुरू करते हैं और फिर अपनी जो ओपिनियन होगी वीडियो के एंड पे डिस्कस शेयर करेंगे। ओके 1 2 3 Traveling with my best friend today. How are you? Best friend. Life is like cricket, no? That's what he wanted to say. No, thank you so much. Today we are flying Air India's brand new AIRBUS A350 from Mumbai all the way to Chennai, showcasing their brand new cabin design, meeting lots of other F-geeks and celebrating a milestone moment for Indian aviation. So lean back and join me on this spectacular day. Bye-bye. Thank you. Bye. ट्रैवल ब्लॉगर हैं, ये इंडिया में पहुंच चुके हैं। Guys, a beautiful good morning. Today is the day. Today is Air India. Excitement देख रही हो चेहरे पे? Airbus A350, the first plane with the brand new livery, is going into service. पहली फ्लाइट पे चढ़ गया गोरा। Extremely proud and happy to be part of this historic event. So let's do this and let's check in for our flight from Mumbai to Chennai. So it didn't take long to bump into subscribers and F-geeks who happen to be on the flight as well. So how do you feel about the new Air India? Like really excited for this flight as it's the first A350 in India. Yeah. So really excited to be on this flight. And how do you like the new livery? Oh, I love it. I mean, it's nothing compared to the one in 2001 and 2002, but it's still pretty good. But once it rolled out in Toulouse, everybody was like, oh my god, this is beautiful, this is amazing. Right. So we'll see it with our own eyes in, I guess, half an hour. So boys, let's head to the gate, nah? Yeah. गोरा फिल्म पर पूरे चिल मस्ती में है इस टाइम। एयर इंडिया गोरे के रिएक्शन देखने के लिए मैं तो वेट कर रहा हूँ कि वो क्या रिएक्शन होगा जब एंट्री मारेगा। First 350, it's right there in person. We're looking at it. What do you think? Super excited. Super. I think it's a beautiful. Looks nice, no? Oh yeah, did you hear that? He said he's more excited to see me than the 350. Because it will say No, both. We are neutral. I'm sure I heard he said me. For me, like it's 70% you and 30%. There we go. You earned a few subscribers. He saw everyone is there, really excited for the first arrival of the Airbus A350. So you can see सारे ना स्टोरियां बनाने पे लगे हुए हैं, उसको एक्साइटमेंट लेवल चेक करो। turnout of F-geeks, and it's just incredible to see that people get so excited about a brand new Airbus A350. See you on board, huh? You economy people. ये तो वो वाला डायलॉग है जो मुझे मारा था कि गरीब हो। Thank you. आई थिंक ये जा रहा है बिजनेस क्लास में, वो सारे इंडियंस गए। हाँ तो उसने टॉन्ट मारा है ना, इकोनॉमी वालों कैसे हो। 350 of Air India, brand new livery, brand new cabin. Very much looking forward to get a first glimpse of the cabin. I'm sure it's going to be amazing. Yeah. What's your favorite airline in India? Air India, yeah. Huh? Brave statement. एक प्राउड फील होता है ना कि अपनी चीज बनाई हुई पे हम जो है ट्रैवल करेंगे। Because it's an A350, that's my favorite aircraft. It is your favorite aircraft, right? Beautiful. 6th A350. Incredible. अभी तो आई कहाँ से फेवरेट हो गई, जैसे बचपन से उसी में ट्रैवल करता। दूसरी बता रहा, दूसरे नाम। Singapore Airlines. Yeah, I think we agree. We agree on that one, huh? Beautiful bird. Oh, let's get on board. How are you? My superstar? Air India star? Thank you. Hi, how are you?
Or 4K, I think. 4K. Hi, thank you. GoPro कैमरा यूज कर रहे How हैं. are you? Nice to meet You you good? again. Last time it was on Star Air flight. Yeah, I remember. तो पहले भी मिले हुए थे मेरे. What's your first impression, Sam? You like it? Very good. Very good, no? You're just in front of me, actually. There you go. मतलब Traveling कि with my best गोरे friend का today. इतना इम्प्रेस होना ये बहुत बड़ी बात है. That's it. You like it? Yeah? Yes, it's different. It's day and night's difference. It's not the usual Air India decor. It's nothing like it. वो लग रहा है New मुझे chapter has started now, and we are all here. Thank you so much. Everyone, there's so many AF geeks. AF geeks, no? Came originally from a 7 a.m. from Bangalore, Yeah. and they are staying on board. When I got board, I was surprised. There's so many people already here. Surprise. And then the cleaner has to eventually come through to clean the cabin because everyone was so enthusiastically taking pictures. अपने दुनिया की सारी ज़बानों में बात कर सकते हैं. Every single one of them. Everything is possible. And This is Harry. He's an aviation YouTuber. Can I say that as well? Absolutely. So we have some local expertise here. So how do you feel being here today? I feel great. So Josh and Sam makes video in English. Same videos I make in Hindi. So just that's the difference. That's all. Big fan of Josh. Thank you very much. And what's your first impression? How do you like it? It's really good. वो भी मतलब ट्रैवल ब्लॉगर ही है. ट्रैवल ब्लॉगर मिल गया. It's just the starting I feel, and it's a long way to go, but the beginning is really good. Yeah. But it's a nice thing to say. I'm proud. And this is what I think one of the biggest projects in aviation history, not just in India. Whenever you used to search Air India, what were the things you used to get? बहुत So many पूरा वो भी things बने हुए हैं सेक्शन क्या Such a big transformation. Yeah. It's It brings pride back to the nation as well. And you know what Indians are like? Indians, they love, they endorse, they love take their pride country. into- they take pride Exactly. And it hurts. For Indians, if you say something bad about Lufthansa, I would probably jump on the same boat and say, yeah, terrible. But Indians, when you say even Indians, even if they agree, Indians, that India was terrible in the past, they would still have a sore heart because it hurts them because they know what a great airline it used to be. And this is the cultural sensitivity that we have to have sometimes as well. And that's what I think is very important. It's incredible that we are witnessing all this together, right? Exactly. First of all, I'm proud that I'm in his video. First of all, that's a big thing for me. And also, Indians are more emotionally driven. We are more emotionally driven, and so because it's a great comeback. Life is like cricket, no? That's what he wanted to say. So people understand it. Life is like cricket. There's up and downs, and sometimes you think you go into the final and you think you win, but then you क्रिकेट के वही यही थी. India was Australia. Bro, don't remind that. It still pains. Don't remind All right, it was nice meeting you, man. Huh? All the best. Enjoy the flight. Yeah? So guys, here we are. Welcome aboard the AIRBUS A350, the brand new It still pains. flagship still hurts बोलना था but चलो कोई India. And the first impression, look at this business class seat. It looks stunning. It was originally meant for Aeroflot, but due to गोरे के ना sanctions, expression से लग रहा है कि वो बहुत so some of surprising them है. went to बहुत Turkish ज़्यादा Airlines. excited A few of them ended up with India. So. And the seat is just outstanding, and I think this is the transition that India is going through, transitioning back to a world-class airline after all these years of बहुत अच्छे से वीडियो struggle and बनाई है, identity proper दिखाया है crisis, सारा. funding सब issues, detail and में. being a government airline. And now since it's back with Tata, things are happening. The new branding. और स्टाफ बहुत कंफर्टेबल है कैमरे के साथ. There's more to come over the years, and as you can see, it's like a big celebration here of F Geeks. Everyone came just to be part of this very, very special flight, and so much energy in the cabin. Everyone is so happy, everyone is so excited, and I think that's what we all love about aviation. We are proud and delighted to welcome you aboard one of the first scheduled commercial flights on India's and Air India's first A350. This flight marks a major milestone in Air India's transformation journey. A journey to once again become a truly world-class airline that every Indian is proud of. So we're just entering the runway for somewhat historical takeoff. ये क्या? किया कभी सफर?
जहाज में कभी गई वो हो? तो हाँ वो तो ठीक है बट पाकिस्तान के देखे ही हैं किस तरह के हैं. So one feature I really like about the new seat is the enhanced privacy and जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उन्हीं के अच्छे जैसे एमिरेट्स है या दूसरी कुछ हैं. आपने किया PIA में? नहीं मेरा अभी तक कोई Suite. एक्सपीरियंस. Not Q Suite, Maharaja Suite. There you go. And then you open it. And you एक्स्ट्रा reconnect प्राइवेसी with the मिल world. रही है It's भाई. amazing. डोर भी When क्लोज you कर think दो about भाई. yourself, पर्दे पुर्दे वाला सीन भी lie कोई नहीं है. flat, forward-facing seats in business class on the Dreamliner, and compare it to this product. World of a difference. World of a difference. Incredible product. Incredible product. No, बहुत आला बहुत so आला. beautiful because I love the new. स्पेस काफी जो है ना स्पेस बहुत. Is it comfortable and nice? Like wearing it? That's good. Better than yeah. Yeah. And it looks stylish as यूनिफॉर्म well. पसंद आ गया. I like it. Thank you so much, right? Thank you. So to celebrate a special occasion, I want to give away one of those Cahill key rings. Remove before flight. Looks pretty good on your carry-on. For example, if you board Qatar Airways, instant upgrade. No doubt about this. So all you have to do is leave a comment in the comment section below and share the video with at least one friend, and then you might win this beautiful gadget, this must-have. So we're 45 minutes into the जी है flight. भाई अपने चैनल की प्रमोशन भी कर रहा है साथ चले भी दे रहा to है. go until we touch down in Chennai. खाने And की the बात people आ started गई to है. serve the breakfast. Presentation looks lovely, and this is something a big contribution from the Vistara side. You know, Nice both airlines are menu. merging towards the end of the year, and catering on Air India was always a nightmare. But that is what Vistara brought. गोरा to तो the तारीफें कर occasion. कर के ना भाई लेवल The कर रहा है. quality when it comes to food. And now let's dig in and see what it tastes like. So, and we are just about to land in Chennai. It's been a great flight, a celebration of aviation, and you guys probably noticed that Sam was on the flight, and you're probably wondering, what was the encounter like? And to be honest, it was very pleasant, very respectful. We shook hands, we acknowledged each other, and a little bit ago we had a conversation about the differences that we have, and but we also acknowledged that we have different angles that we look at aviation. While I am very passionate about holding airlines responsible, using my videos to improve the traveling experience for customers, and he is more of the behind the scenes kind of guy. Sometimes I wish he would use his voice or his platform but more to be more critical and to bring improvements to the industry. But what's important is that we sit down, you know, I'm a very approachable person, so is he, and we talked about stuff. That's what men do. We sit together, shook hands, I even gave him one of my key rings, and we had a great conversation, and for that I'm very grateful. I always love to build bridges. I don't like to burn them, and it was very important for me to have that talk and that chat with him. However, I will also always keep an eye, keep on his toes. And now let's land here in Chennai. चेन्नई तमिलनाडु में ना चेन्नई लैंड भी हो गए Sam, I'm off, huh? I see you, huh? Alright. Thank you, Josh. Yeah. See you guys. I hope you guys all enjoy the flight. See ya, huh? See ya. See you, bye-bye. You good? तो 3 व्लॉगर तो मिल गए हैं एक साथ ही इसका एक्सप्लोर करने आए हैं. See you guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I did. ये ट्रैवल ब्लॉगर्स है वो तो करते हैं ना बैठे रहते हैं कि कुछ इस तरह का नया आया तो फिर हम एक्सप्लोर करें. So guys, and here we are in Chennai, my favorite airport in India. What a day it was. What an adventure it was. And that is the power of aviation. Favorite airport in चेन्नई India, का चेन्नई एयरपोर्ट It was प्यारा तो है enormous वैसे. celebration. बहुत प्यारा है. It's a stunning plane, and every time I fly Air India, they get better and better, and they have
really done an incredible job. And if somebody can pull this off, First this merger fly. of these two massive airlines, then it is ये Tata, चीज and they're doing a Air tremendous India. job, and that is very nice to see. And it's also nice to see a lot of you guys. Thanks for saying hello. And yeah, that's what I love about aviation. Now it builds beautiful bridges, it brings people together, and that's when we forget about all the nonsense that is going on. I'll be flying back now to Sri Lanka. I'm going home, and I'd love to hear what you think in the comment section below. And yeah, also check out my Patreon. Link is in the description box below. And this should be it. Guys, wherever you're off to, have a safe trip. कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा है। और पहले हमने एक वीडियो देखी है, उसमें बड़ा थोड़ा थोड़ा हमें जो है चीज़ें देखने को मिली हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो पूरा एक्सपीरियंस देखा है कि स्टार्ट से लेकर कैसे टिकट ली, कैसे फिर आगे गए, कैसे बोर्डिंग हुई, कैसे एंट्री हुई, कैसे आगे से स्टाफ ने वेलकम किया। वो अपनी कन्वर्सेशन में स्टाफ की भी बहुत ज़्यादा बात कर रहा था कि किस तरह वेलकमिंग स्टाफ है। फिर एनवायरनमेंट की उसने बात की कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। उसके अलावा फिर जो डिफरेंट और लेकिन उसका भी एक पर्सपेक्टिव था कि इस तरह के थोड़े इंडियंस होते हैं, थोड़े हॉस्टाइल होते हैं, लेकिन उसका भी पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, उसने ये भी बताया है। तो मतलब पूरा, और जो सारा उसने पूरा बहुत डिटेल्ड में समझाया है, दिखाया है, जो लाइक पूरी जो सिनेमेटोग्राफी उसने अपने कैमरे से की है वो अच्छी है, बहुत अच्छी। और एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है बीच में कि हर पॉइंट को अलग अलग से कैप्चर किया है और सारा दिखाया है, और पूरी जर्नी समराइज की है, पूरी जर्नी को समराइज किया है कोई 14-15 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे इस 14-15 मिनट में हमने सफर कर लिया सारा, साथ में हम बैठे हुए हैं, हम खा रहे हैं। और ये फर्स्ट टू फ्लाई है, तो आई थिंक ये पहली ही इनकी, यानी कि जो A350 है उसकी पहली फ्लाइट थी ये। तो वो उनमें 3 वो थे लाइक व्लॉगर्स थे, 3 ट्रैवलर, क्या कहेंगे हम उसको, ट्रैवल व्लॉगर्स ही होते हैं, तो वो एक्सप्लोर कर रहे थे, तो बहुत अच्छा था। और इस तरह का ये जो इंडस्ट्री है ना, इस तरह जो कर रहे हैं ना ब्लॉगर्स, उनसे बहुत ज्यादा प्रमोट होती है, लाइक वर्ल्ड तक पहुंचती है। अब इसका पूरी दुनिया ने देखा होगा, अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। और ये तभी होगा ना जब आप कुछ बनाओगे। अगर आप कुछ बनाओगे नहीं तो ट्रैवल ब्लॉगर्स कहाँ से आएंगे। और अगर आप कुछ बना रहे हो और बना भी आप किसी से लोन लेकर या किसी से पैसा उधार लेकर, आप वो ट्रेन, अगर हम ट्रेन की बात करें तो हम तो चाइना बना दो, फलाना बना दो, ये बना दो। तो वो जो सोच इंडियंस में पाई जा रही है ना कि हमने, अच्छा वो इंडियन बड़े प्राउड थे, बहुत प्राउड करना भी चाहिए, प्राउड बनता भी है। प्राउड जब आप चीज़ों को मैन्युफैक्चर करोगे, अपनी चीज़ों को आगे लाओगे, एयर इंडिया अपनी कंपनी को आगे लाओगे, तो इस तरह फिर प्राउड तो बनेगा। वहाँ के जो इंडियंस हैं वो सफर करेंगे। अच्छा मुझे मेरे जितने भी देखने वाले हैं व्यूवर्स हैं वो ये बताएं कि किस किस ने अभी तक A350 में ट्रैवल कर लिया है, ये और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये जरूर शेयर करें। क्या ये जो स्टाफ है ये सिर्फ व्लॉगर्स के सामने इतने अच्छे हो जाते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये सबके साथ बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन एक टाइम पे जाके होता है ना, या वेलकम आ जाए ऐसे भी हो जाता है ना। और अब क्या ही कर सकते हैं, हम आ गया था। अच्छा, तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपका इसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और भी बताएं और किस तरह की एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, क्या हो रहा है। हाँ। क्या हो रहा है, और मजीद हमें इसके बारे में अगर कुछ चीज़ें हम अगर मिस कर गए हैं, कुछ फंक्शंस या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ज्यादा पता है, तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारा नॉलेज गेन लेकिन आपने फिर PIA के आई थिंक वो नहीं देखा स्टाफ। मैंने सुना PIA का स्टाफ बहुत थोड़ा सा वो होता है, एग्रेसिव सा होता है। नहीं, मुझे मेरे दोस्त वगैरह आते जाते रहे, ये नॉर्मल है, ठीक है, वो भी ऐसे ही वेलकम करते हैं। मतलब मैंने सुना है कि वो थोड़े से ना अनफिट होते हैं, ये थोड़ा सा जाहिर है जब कुछ चीज अच्छी तरह नहीं चल रही होती, प्रॉफिट लॉस हो रहा होता है, थोड़ा मूड ऑफ हुआ होता है स्टाफ का भी, तो जाहिर है अभी जो एक टाइम पे PIA बहुत ज्यादा अच्छी थी, बहुत अच्छी, लेकिन फिर वो इतने क्राइसिस, उधर गिरवी दे दो, एयरपोर्ट उसको दे दो, जहाज इसको दे दो, उसको दे दो। मतलब कब हम अपनी जिम्मेदारी खुद लेना शुरू करेंगे जिस तरह इंडिया ने ली है? मेरा सवाल है आपसे, कब? I don't know. हम तो देख रहे हैं, हमें दुनिया नजर आ रही है, तो सबको देख रही है, इंटरनेट का दौर है, हर बंदा देख रहा होगा कौन क्या कर रहा है, तो इंस्पायरेशन तो बनती है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि अब जो एविएशन पढ़ भी रहे हैं, जो एविएटर्स हमारे आ रहे हैं, उनका क्या फ्यूचर कोई कैरियर नहीं है। आप अगर देख लेना UL में जो पूरा एविएशन का पूरा डिपार्टमेंट है, और वो बहुत सूट पहन के अपने रहते हैं, बट आप देखो कि उनका फ्यूचर क्या है, वो उनका है ही नहीं, क्योंकि इतना कुछ अपनी 100 में से 2 को मिल जाएगा,
3 को मिल एयरलाइंस जाएगा। ही नहीं है। हाँ, तो आई थिंक ये होना हमें भी चाहिए। इस पे वर्किंग करने की ज़रूरत है, फिर हमारा भी जो है वो अच्छा खासा सेटअप चल पड़ेगा। ये चीज़ जो इंडिया ने की है वो चीज़ पाकिस्तान को भी करनी चाहिए और उसके लिए प्लान करना चाहिए, ताकि इसी तरह अगर यही कोई पाकिस्तान वाले इस तरह का कोई बनाते तो फॉरेनर जो हैं ट्रैवल व्लॉगर्स आते पाकिस्तान के जाते तो वो भी एक अच्छी चीज़ होती है। वो आते हैं बाहर के जो व्लॉगर्स वगैरह हैं, वो आते हैं, वो बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर बाकी कर लेते चीज़ों हैं, मार्केट या मार्केट को, वो सारा। नेचर हमारे पास पाकिस्तान में बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं। अगर हम नरान कगान, मुंजा, गिलगित, तो इधर बहुत फॉरेन लेकिन वो यहाँ पे मिलते टेक्नोलॉजी हैं। एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं ना। टेक्नोलॉजी हो तो एक्सप्लोर करें ना। टेक्नोलॉजी तो सारी चाइना की लेके हम बैठे हुए हैं। ठीक है, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है हम ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये सोच बना लेना कि सिर्फ उन्हीं ने जो बनाना है वही हमने यूज़ करना है, तो ये एक अपने आप को बैक फुट पे करने की एक सोच है। अच्छा चलें, आप लोग मुझे बताएं कि किस किस ने ट्रैवल कर लिया है और किस किस का प्लान है कि वो इसमें ट्रैवल करेगा। अपनी आपका प्लान है? यहाँ पे मैं एयर इंडिया में कैसे कर सकती हूँ? तो हो सकता है ना, जो वो सारे जो जा रहे हैं, हाँ, जो पाकिस्तानी व्लॉगर्स जा रहे हैं। हाँ। पाकिस्तानी कौन है? अभी हमने थोड़ी देर पहले एक व्लॉग नहीं देखा, वो चला गया इंडिया में, अब हाँ, मुंबई से चेन्नई जाना है, मतलब सिटी टू सिटी जाना है ना। लेकिन नहीं, उनको अलाउ है वो जो पाकिस्तानी व्लॉगर था। हाँ, वो अप्लाई करते हैं, वीजे के लिए अप्लाई अच्छा, करते हैं, मिल जाते हैं कुछ ना कुछ, ज़ाहिर है मिल जाते हैं तो जाते हैं। हाँ ये भी है। चले देखते हैं कि क्या होगा। आप लोग लेकिन जो इंडिया में, वो पहले हमें बताया कि कौन कौन ट्रैवल करेगा। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब कुछ करते हैं और अटैच रहें इनसाइड रिएक्शन के लिए, क्योंकि हम बहुत सारा जो है कंटेंट इस पे ला रहे हैं और मज़ीद बहुत सारी चीज़ों के लिए अनाउंसमेंट भी हम करते जाएंगे। बहुत सारा बॉलीवुड हो गया, जर्नल वीडियोस, किसी किस्म की भी चीज होगी, मुझे स्ट्रीट फूड बहुत मुझे पसंद अगर आपको आपके पास कोई ऐसी वीडियोस नजर आती है जिसको बहुत इंटरेस्टिंग है, एंजॉय करने वाली, तो आप हमें शेयर करें, हम मिलके देखेंगे, हम भी देखेंगे, वो भी देखेंगे। हर फूड में वो बटर डालते हैं, चीज हर चीज में डालते हैं, तो वो भी उस तरह की वीडियोस भी हम देखेंगे, हम सब कुछ देखेंगे। हाँ जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।